शंकरबाड़ी लेन में हल्ला लोहला निवास में गच्ची के ऊपर हमने शुरू किया। एक हमारे पास पैसा भी नहीं था इतना, और 80 रुपया उधारी लिया, उसमें से हम सब सामान लाया 80 रुपया में से ना। एक पैली दाल मसाला सब लाया, उसमें हमने एक पैली दाल का पापड़ बनाया। तो पहला दिन हम 7 बहन था, और 7 बहन ने पापड़ आटा गूंदा कुटा सब करके पापड़ तैयार करके हमने बनाया एक पैली का। तो उसमें से छान छान के पापड़ अच्छा निकाला तो 4 पैकेट ही तैयार हुआ। It was the 15th of March, 1959. Frustrated with their everyday struggle to make ends meet, few of the housewives in Girgaon, a lower middle class locality of South Mumbai, decided to do something about it. After much thought, they came up with the idea of making papad, something which all of them were familiar with. It wouldn't interfere with their housework, and they could use the terrace of their building in the afternoons. For a couple of weeks, the first 7 were on their own. But when other women in the colony saw the business grow, they too joined in. By the end of the first month, there were 24 of them. And by the end of the year, they already had their first export order. Clearly, they had hit upon an idea that worked, and one that could be applied within the constraints of an active family life. Jyotiben's family was one such household. With 4 children and just one earning member, money was always in short supply. The curious 10-year-old would watch intently as a neighbor rolled papad and even help her on occasion. When she heard that the lady was paid daily for doing this, she cajoled her mother to accompany her to the nearby Wadala branch, where they became sisters of the Lijjat family. The year was 1971, and Jyotiben was now a proud papad roller. सुबह हम लोग 4 बजे उठते थे, बाद में वडाला में ब्रांच थी, वहाँ से हम लोग पापड़ देने का, आटा लेने का, बाद में घर पे आने का, घर पे थोड़ा सा नाश्ता विश्ता करके हम लोग टेरेस पे पापड़ बनाते थे. The family was happy for a while, but tragedy struck when Jyoti's mother died a few years later. Her father couldn't face the loss and quit his job. Suddenly, at the age of 16, Jyotiben found herself the financial head of the family. पूरा दिन हम लोग धूप था, इसके लिए धूप में ही पापड़ बनाना होता है. इसके लिए पापड़ बना के शाम को मैं नाइट स्कूल में जाती थी. घर पे पूरी बड़ी सबसे बड़ी मैं थी, इसके लिए पूरी जवाबदारी मेरे पे थे. बाद में मैं नाइट स्कूल करके आके 10 बजे घर पे आती थी. दिन भर काम करके और ये करके मैं थक जाती थी. Unable to cope, she failed her 10th standard exams. She began to spend more and more time at the Lijjat Center. The time spent there paid off in other ways as well. पहले मैं स्टोर में काम करती थी. स्टोर के ऊपर के बाद मैं संचालिका का सब काम मसाला पानी करने का सीखी थी. बाद में मैं 82 के बाद संचालिका बनी. संचालिका बनने के लिए बाद मेरी शादी हो गई. बाद में मेरे घर वाले बहुत अच्छे थे और सब मदद में काम में मदद करते थे. मेरे को किधर जाना होगा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं करते थे. जब भी जाने का हम मदद करते थे वो खुद करते थे. और बाद में मैं कमेटी मेंबर बन गई थी. कमेटी मेंबर बनने के बाद मेरे को वाइस प्रेसिडेंट में चुना गया था. वाइस प्रेसिडेंट में 8-9 साल हुई थी. बाद में आज 4-5 साल हो गए मैं प्रेसिडेंट हूँ. Like Jyotiben, every sister has to start as a papad roller if she wants to get to the top rung of the 21-member managing committee, elected every 3 years from the general body of sisters.
This committee makes all the major decisions. Jyotsna Shinde has just come to the Bandra branch in West Mumbai to join the Lijjat Sisterhood. Like all prospective members, she is asked to sign a pledge. The pledge binds her to the Sarvodaya principles of social reformer Vinoba Bhave, which the sisters embraced from the beginning. Self-reliance, co-ownership, and faith in the dignity of labour are the key tenets of this philosophy. All sisters have equal ownership and an equal share of profits in the organisation, irrespective of seniority or rank. Everyone is also paid their wages on a daily basis. मी लिज्जतमध्ये आले कारण की मला त्याच्या अटी बऱ्या वाटल्या. मी काम केले की मला रोजच्या रोज त्याची बनाई भेटेल. त्याच्यासाठी मला महिनाभर वाट बघावी लागणार नाही. लिज्जतमधल्या सदस्य भगिनी ह्या नोकराप्रमाणे नसून तर मालक वर्गाप्रमाणे वागतात. लिज्जत हा एक परिवार आहे. ह्या परिवारामध्ये मला काम करायला आनंद वाटतो म्हणून मी या परिवारामध्ये सामील झाले. By 1966, the sisterhood had grown to 500 and annual sales had touched 7,50,000 rupees. They were large enough to be registered as a cooperative society. It was only then that it struck them their 7-year-old organization didn't have a name. मंगल ग्रह बहुत अच्छा है आपके लिए. आप ल और ई शब्द से नाम रखते हैं तो आपका व्यापार बहुत अच्छा मालूम चलेगा. पड़ा कभी नाम पण चाहिए, रजिस्टर हुआ तो नाम पण चाहिए. तो हमने एक कुंडली निकाला लिज्जत का, उसमें ल नहीं वो दिन का ल नहीं ये नाम आया कुंडली में. तो हमें लोकल पेपर में दिया तो बहुत सारे नाम आए थे उसमें पर. तो उसमें से सब नाम निकाल के सब बहुत जना हमें काफ़ी गच्ची में जमा हुआ था. सब लोग आए थे कि क्या नाम रखता है वो देखने के लिए. तो सब निकाल के धीरज बहन था उसको निकाला कि लिज्जत अच्छा नाम है. तो हमारे को भी लगा कि लिज्जत नाम अच्छा है. हमारे गुजराती में बोलता है कि खाने में बहुत लज्जत आई, टेस्ट आया ऐसा. तो ये लिज्जत नाम से आगे बढ़ेगा, बहुत अच्छा आगे बढ़ेगा, वो हमको सोचा. Meanwhile, the Girgaon branch was getting too cramped to accommodate the increasing number of sisters. At one point, there were 500 sisters coming there every day. The sisters decided to open new branches, and within the next 5 years, there were 9 more branches. Pratibha Bhen joined the then newly inaugurated Bandra branch in 1972. The snapshots in the family album have yellowed with age, but her memories are still fresh. Her husband used to work in a printing press, and the children were growing up. She was looking for ways to augment the household income and jumped at the chance when a neighbor told her about Lijjat. But things did not go smoothly in the beginning. पहला एक दिन मैं गई लिज्जत में, शुरुआत पहले से. जब उधर मेरे को 1 किलो आटा दिया, मैं ऐसा ही वो आटा उठाई और घर में आई. घर में आके वो चपाती बनाती ऐसा बनाने को लगी तो मेरे को हाथ बहुत दर्द होने लगे. हम बोला ये तो बना के दे रखा है मैंने, वापस कल बोलेगी उधर जाके मेरे को ये आटा नहीं मांगते बाबा काम, मेरा हाथ बहुत दर्द होता है. मैं चपाती भी बेल सकी नहीं रात को. ऐसा सोच के मैं सुबह उठ के गई वापस मंडल में. उधर वो बांद्रा केंद्र में लीलाबेन संचालिका थी, उसको बताया बाबा ये पापड़ आपका लियो, मैं कल से नहीं आएगी, मेरा हाथ बहुत दर्द होता है. तो लीलाबेन बोला ऐसा डरने का नहीं, डर के कुछ होएगा ही नहीं, तू इधर ही आज आटा लेके बनाओ, मैं सिखाती है तेरे को. उसने सब सिखाया मेरे को अच्छा से, आटा कैसा खींचने का, गोली कैसा काटने का और वो ऑयल लगा के कैसा बेलने का. और मेरा जल्दी हो गया पापड़. मैं बोला अरे वाह ये तो अच्छा है, कल से तो मैं 2 किलो बेलूँगी. ऐसा करके मैं फिर मेरे को अच्छा लगा और मैं
आटा बढ़ाती गई, 3, 4, 5 किलो ऐसा बढ़ाती गई। और बाद में मैं उस मेरे को लीला बहन ने पैकिंग में रखा, तू अभी पैकिंग करने को इधर बैठ। फिर भी मैं थोड़ा सा आटा लेके जाती थी, पैकिंग करती थी। अभी तो मैं एक वडाला शाखा, हमारा बॉम्बे में सबसे बड़ा शाखा है उधर की, तो मैं संचालिका है। Long before sunrise, while Mumbai still sleeps, Pratibha Ben is already on her way to the centre. As always, she is the first to arrive. From the tired housewife who was ready to quit on day one to the professional that she is today, Pratibha Ben has come a long way. As the first hint of dawn tinges the darkness, the Lijjat buses begin to pull in. The first job is to prepare the dough for tomorrow's papad. As more sisters come to the branch, there is a friendly hubbub of women who have come in to get their papad weighed and checked. Once this is done, they pick up their cash earnings for the day and go and collect the dough for tomorrow's papad. Pratibha Ben helps the sisters in her centre, just like her Sanchalika Leela Ben did when she first joined. मेरे व्यक्तिगत संबंध गहरे हैं और वो बहन के भी मेरे साथ व्यक्तिगत हैं, इसलिए कि उसके घर में कभी कुछ तकलीफ हो गई तो मैं जाके आती है, मिल के आती है, और वो लोग भी मेरे को उसके घर वाले पहचानते हैं और मैं भी उसके घर वाले को पहचानती है। और हमारे बहन लोग क्या ज़्यादा पढ़ी लिखेली नहीं है, फिर भी हम लोग इधर सिखाया है उसको, थोड़ा तो पढ़ने सीख गई है अभी और थोड़ा लिखती भी है। और उसके तो मिस्टर तो कौन किसके किसके काम पर नहीं है, इसलिए वो बहन बेचारी ज़्यादा आटा लेके जाती है और अपना घर संभालती है उसके ऊपर। Caste and creed don't matter at Lijjat. Everyone is welcome, as long as she is a woman and willing to roll the dough. Most are given 2 days training, a teak rolling pin and an aluminium rolling board, and then they're ready to start. Kamal More has been a papad roller at the Wadala Centre for close to 22 years. Working at Lijjat has meant more money for the home, a small chole on the wrong side of the tracks. मला माझ्या मैत्रिणीने लिज्जतबद्दल माहिती दिली, त्याच्यानंतर मी वडाळा शाखेत आले. आमच्या संचालिकाने मला सांगण्याचं लाटण्याचा उत्सव दिला. नंतर मी पापड लाटून माझ्या मुलांचं भविष्य सुधारलं. शिक्षण पूर्ण झालं त्याच्यावरती. Although most sisters at Lijjat are expected to roll 3 kilos of papad a day, senior members like Kamal More are able to roll between 5 to 10 kilos
since the whole family gets involved. नाही निर्मला ती माझी भाऊज आहे. कमीत मी 10 किलो पापड लाटते. माझी मुलगी पीठ खेचून देते, पापड लाटायलाही मदत करते. माझे मिस्टर मुलगा पापड सुकवतो, पापड पुसायला मदत करतात. काय अशी मला घरच्यांची मदत असताना मी हे सगळं काम करते. In a small room, beside the mixing area at the Wadala branch, there are women sitting on the floor, writing painstakingly on their blackboards, working their way through the alphabet. They are part of the Lijjat literacy program for the sisters called Akshardeep, or the Lamp of Learning, which was started 2 years ago. शिक्षणाचा मला खूप लाभ मिळाला. वयाच्या मानाने मला शिक्षण उशिराच मिळालं, पण त्याच्यामुळे मी लिहिता वाचता मला सगळं येतं. ट्रेन कुठे जाते हेही कळायला लागलं. मी ट्रेनने एकटी प्रवास आता कुठेही करू शकते. बसनी सुद्धा प्रवास करू शकते, का तर बसचे नंबर कळतात. बस कुठे जाते हेही मला कळतं आहे. मी आता कोणाला मला विचारायची गरज नाही का मला कुठे जायचं आहे. मी एकटी जाऊ शकते, शिवाय एकटी घरी येऊ शकते. आता मला काही मनात भीती राहिली नाही. पण मला शिक्षण नाही म्हणून मी आता कुठे जाऊ. मला लिज्जतमध्ये आल्यानंतर शिक्षण मिळालं हे मला खूप आनंद वाटतं आणि याच्यात मी खूप खुश आहे. But despite the informal family-like atmosphere, Lijjat is a business, though some of their practices seem quite unconventional, like their no credit policy. No supply is asked for credit and no distributor is extended any. Every afternoon, the papad produced by the sisters on the previous day is taken to the Lijjat depots. Here, distributors and exporters pick up their requirements on a daily basis against immediate payment. आमची संस्था सुरू झाल्यापासून आम्ही उधार माल विकायचा नाही असं नेमच केलेलं आहे. कारण उधार माल विकायचा नाही, आम्हाला रोजच्या रोज हिशोब करावा लागतो. बहिणांची मनाई रोजच्या रोज द्यावी लागते आणि रॉ मटेरियल रोज विकत घ्यावं लागतं. त्यासाठी पैसा पाहिजे. त्यासाठी आम्ही उधार माल कोणाला देत नाही. Lijjat's unusual business practices don't end here. Their pricing policy flies in the face of normal market practices. हम लोग को ग्राहका को फंसाने का नहीं है. हमारा मिरी दाल उड़द दाल उसका भाव कम हो गया तो हम पापड़ का भी भाव कम करते. बढ़ गया है तो बढ़ाते भी है. इसलिए ग्राहक कभी फंसाते नहीं हम लोग ग्राहका को. The sisters seem particularly proud of the fact that Lijjat papad is known for its quality and taste. Only the best ingredients pass muster. Viju Dattani is the Sanchalika of the Raw Materials Division, which supplies 850 tons of urad dal, 3 tons of asafoetida and 20 tons of black pepper on an average each month to Lijjat branches across the country. Suppliers know Viju Ben to be a very tough customer. लिज्जत का क्वालिटी एक ही रहना मांगता है. इसके लिए हम सब जगह से हींग मिरी मेन रहता है पापड़ में, तो हींग मिरी इधर ही रख के सब जगह को भेजता है. एक ही क्वालिटी होना मांगता है. हींग बोलेगा तो लिज्जत का हृदय बोला जाता है. इसके लिए हम यहाँ से ही सब जगह को देता है, क्योंकि एक ही स्वाद का पापड़ सब जगह से मिलना मांगता है. इसके लिए कोचिन लो, मद्रास लो, राजकोट लो, बम्बई लो, किधर से भी आप पापड़ ले लो, एक ही स्वाद का मिलना मांगता है. यहाँ से ही हम बेचता है हींग. The finished papad made by each branch is also subject to a unique test, the ruthless taste buds of the managing committee.
Pratibha Ben's husband has retired. Her son and daughter are both employed and the family doesn't need her to work. But she still puts in a full day at Lijjat. However, things were not always this good. मेरे बच्चे लोग की पढ़ाई हो गई, मेरे और घर का भी कुछ सब खर्चा आसान हो गया था। मिस्टर का पगार कम था, पापड़ बेल के पैकिंग करके ऐसा मेरा अच्छा चलता था। एक दिन ऐसा हो गया, मेरा लड़का 8वीं में था और लड़की 10वीं में थी, तो लड़की पास हो गई 10वीं में। मेरे मिस्टर बोले अभी उसको पढ़ाई मत कर, मेरे पास पैसा नहीं है। मैं मिस्टर को बोले मैं तो लिज्जत में है ना, मेरे को तो पैसा मिलता है, हम लड़की को पढ़ाएंगे। मेरा लड़की अच्छा से पढ़ा कर अभी खादी कमीशन में काम कर दिया। हेलो, संजय है क्या? संजय? Her son Prashant, meanwhile, works as a sports journalist today. कारण काय मला जरा मोबाईल नंबर दे जरा. लहानपणी आम्ही जेव्हा शाळेत शिकत होतो, माझी बहीण आणि मी, त्यावेळी माझ्या वडिलांचा जो नोकरीचा जो खर्च असायचा आमचा, म्हणजे त्यांना जो पगार मिळायचा त्या पगारातून आमचा काही खर्च भागायचा नाही खर्चा. अशा वेळेला आमच्या आईने लिज्जत संस्था जॉईन केली आणि ती जॉईन केल्यानंतर आम्हाला इतका फरक पडला आमच्या लाईफमध्ये की मी स्वतः पापड लाटलेत, माझ्या बहिणीने स्वतः पापड लाटलेत. मला या गोष्टीचा अभिमान वाटतो सांगताना की लिज्जत संस्थेने आम्हाला एवढा मोठा हातभार लावला आणि ते करता करता आम्ही दुसऱ्या बाजूला आमचं शिक्षण पण पूर्ण केलं आणि शिक्षण घेता घेता आम्हाला जे आमचं लाईफमध्ये प्रोग्रेस करायचा होता तो पण आम्ही प्रोग्रेस केला. आज मी पत्रकार म्हणून काम करतो आहे आणि आज एक 20-25 वर्ष झाल्यानंतर सुद्धा आम्हाला लिज्जतने जो हातभार पूर्वी लावलेला आहे तो आजही आम्हाला त्याचा फायदा होतो आहे पूर्ण. Beyond the vanai that each sister earns in cash on a daily basis, she also gets a share of Lijjat's profits at the end of the year. This is given in the form of gold coins. को 22 तोला सोना मिला है आज तलक, पहले से आज तलक में। तो हमने हमारी सोना में मेरे को काफ़ी काम आया कि बहू को 5 तोला दिया, दोनों लड़कियों को 5-5 तोला दिया। जो बचा है वो हमारा पोता पोती के लिए मैंने रखा है थोड़ा, कि और टाइम को मेरे को बहुत अच्छा पड़ा ये सोना था कि मेरे को लेना नहीं पड़ा कुछ। आज जो भी मैं है वो लिज्जत की वजह से, छोटे से बड़ी हो गई वो लिज्जत की वजह से आज मैं दिखती हूँ, इतना दिखती हूँ। जब भी मैं लिज्जत में आई थी तभी पैकिंग का काम करती थी, बाद में मुझे स्टोर का काम करने के लिए तभी हम लोग इतना भी मालूम नहीं था मुझे कि फ़ोन कैसा लेना है। फ़ोन की घंटी बजती थी तो भी मेरे को मालूम नहीं था कि ये फ़ोन है, तो हम लोग तुरंत संचालिका को बुला के बोलती थी फ़ोन आया है ले लो फ़ोन करके, तो इतना डरते थे। और आज इतना 300 करोड़ का धंधा मैं संभाल रही हूँ, इसके लिए मुझे बहुत गर्व है। और लिज्जत में रहना है, यानी लिज्जत पैसा भी मिलता है और इज्जत भी मिलती है, ये बहुत बड़ी गर्व की बात है। श्री नारायण तू पुरुषोत्तम गुरु। With 42,000 mostly illiterate sisters across 17 Indian states, rolling out 1.9 crore kilos of papad each year for a sales turnover of over 300 crores, the scale of their achievement is more than just symbolic. It has made the world sit up and take notice. September 6th, 2002. The Regal Room at Mumbai's Oberoi Towers, where the big daddies of the corporate world had gathered to honor their own. A little out of place in the crowd of power suits, Jaswanti Ben Popat, in her Gujarati style white cotton sari. Ladies and gentlemen, please put your hands But when she rose to accept the coveted Economic Times Businesswoman of the Year award on behalf of Shri Mahila Griha Udyog Lijjat Papad, the corporate world gave her a standing ovation. They received
brothers and sisters, and it's a delight that you are on your feet. Thank you very much. Fine. If for the next 1 minute or so, the power of knowledge becomes the power of papad. आदरणीय अध्यक्षा और सम्माननीय व्यासपीठ तथा सभी उपस्थित भाई और बहनों, आज लिज्जत संस्था की सदस्य बहनों को इकोनॉमिक टाइम्स ने सम्मानित किया, यह हमारे लिए गौरव की बात है। आज इस अवसर पर हमारी 40,000 सदस्य बहनों की प्रतिनिधि बनकर मैं यह पुरस्कार स्वीकार कर रही हूँ और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हम बहनों को सम्मानित किया गया, इसलिए हम सभी जूरी का हार्दिक अभिनंदन है। क्या सपना देखो मैं, जो 7 बेल ने हमने शुरू किया तब हमको मालूम नहीं था कि इतना होएगा। तो अभी तो हमको ऐसा होता है कि हमारे 62 शाखा है पापड़ की अभी, तो हमको ऐसा होता है कि ज़्यादा शाखा बढ़े, तो सब जगह में बेन उसका पाँव पर खड़ा रहे ने काम करे, मेहनत करे, वही हमारी इच्छा है। श्री नारायण तू पुरुषोत्तम गुरु तू सिद्ध बुद्ध तू स्कंद विनायक सविता पावक तू ब्रह्ममजद तू यह शक्ति तू ईशु पिता